Hello my dear lovely students, welcome back to your classes. Okay my dear students, in this class there is something new thing. Do you know what is the new thing? I will tell you. The new thing is that from today we are going to start our grammar portion. See, from today we will start our grammar portion. And isn't it new thing? Yes, it is a new thing. So do you know what is the name of our first chapter of grammar? Any guesses? So our first chapter of grammar is, let me show you, it's sentences. Now what is the name of our first lesson? The name of our first lesson is sentences. So my dear students, after listening the word sentence, what come in your mind? Sentence means a sentence which makes a complete sense. Okay, and which is making a little bit common sense. Okay, the word sentence means, my dear students, the complete sentence with a full stop. I'll show you. For example, Ram is a good boy. Now it is a complete sentence. Which one? This. Ram is a good boy. So it makes a sense. What sense? That Ram is a very good boy. He is good boy. And it is a complete sentence with a full stop. Okay. Now another is Sita is a clever girl. So it is making any sense? Yes, it is making any sense that Sita is a very clever girl. She is intelligent girl. So in this lesson we are going to see the types of sentences. Okay. We will see vowels. What do you mean by vowels and what do you mean by consonants? And we will see about subject and predicate also. So are you ready to start the lesson? Okay, without wasting much of our time, come we will start our today's lesson. Okay my dear students, so without wasting much of our time, come we will start. See your page number 46, chapter 1, sentence. Now in a dictionary, words are arranged in a certain orders so that we can find any word easily. मीन्स आपने डिक्शनरी देखा होगा, डिक्शनरी में वर्ड्स हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं, जैसे ABCDEF, इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, ताकि आपको ईजीली वो अल्फ़ाबेट्स के वर्ड्स आपको मिल सके. ओके. In a telephone dictionary and usually in an encyclopedia too, entries are arranged in alphabetical order. Okay. Means telephone dictionary. टेलीफोन डिक्शनरी मीन्स आपने कभी टेलीफोन डिक्शनरी देखा होगा, उसमें भी जो नेम्स रहते हैं जैसे कस्टमर नेम हो गया या एड्रेस नेम हो गया, वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के बराबर अरेंज रहते हैं, जैसे ABCD उसके थ्रू अरेंज रहते हैं. ओके. So here are few rules to be followed. Means there are some rules in this that we have to follow. Now we will see rule number 1. We know how to arrange words in alphabetical order according to the first letter. Now as you know that we know how to arrange words, मतलब हमें पता है कि हमें words को कैसे arrange करना है alphabetical order के हिसाब से. जैसे A के बाद हमेशा B आएगा, B के बाद C, C के बाद D. ऐसा कभी होता है कि ए के बाद सडनली एफ आ गया, एफ के बाद सडनली जेड आ गया? नो. अल्फ़ाबेटिकल वही होता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, ये ही अल्फ़ाबेटिकल का सीक्वेंस रहता है. ओके. नाउ व्हाट शुड बी डन व्हेन द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज द सेम? देन यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर. नाउ व्हाट हैपन इफ द वर्ड्स आर सेम? For example, remote, riddle or robot. Now here words are different, but remote, riddle and robot means first which word comes, letter comes E, then I, then O. So in this form you have to arrange some words or arrange some letters. Okay, understood? So this is rule number 1. Now rule number 2.
and the first two letters are the same. We arrange the words according to the third letter, and in some words the first two letters are same, that we have to arrange the third word. अगर एक word में first के दो लेटर सेम है तो हमें कौन सा लेटर अरेंज करना पड़ेगा? थर्ड वाला. फॉर एग्जाम्पल रिमोट, फेबल, फेड, फॉल्स, फेम. Okay, understood? Now rule number 3. In the first three letters are same, the words are arranged according to the fourth letter and so on. So see, in first we are saying that if the alphabetical first letter, then the second letter, and now the third letter. Okay, so in third letter the examples are trunk, trust, truth. The first three letters are the same. Okay, but next is bounce, boundary and boundary. The first four letters are the same, means see after B O U N. Okay, N is same. Here also B O U N. Okay, and here also B O U N. In same that way the letters are arranged in this way that they are in same manner. Okay, understood? Now see your page number 47. Sentence making. Now how to make a sentence? Okay, words are made up of many letters, means words. See for example sentence. See, sentence is a word. Look here, the name of our first lesson is sentence, and a sentence word is made up of many letters, S, E, N, T, E, N, C, E, S. So many letters are there. So joining these many letters, one word it becomes. Word is sentence. Okay, so to make sentence this many letters are used. Understood? Sentence मतलब एक word बनाने के लिए ये सारे क्या letters use हुए हैं. Okay, understood? Words are made up of many letters. Sentence are made up of words arranged in a meaningful order. Now words are arranged in meaningful order means कुछ words है जो meaningful order में arrange रहते हैं, तो उसको जो मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज रहते हैं तो फिर वो अरेंज वर्ड लेटर्स क्या बन जाएंगे? एक वर्ड बन जाएंगे. जैसे सेंटेंस बन गया. सेंटेंस मीनिंगफुल वर्ड है, मतलब सेंटेंस को सुन के समझ में आता है, अपने दिमाग में आता है कि सेंटेंस मतलब एक कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है एक लाइन में. ओके, तो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल ऑर्डर मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब मीनिंगफुल वर्ड किया हुआ है. मतलब इससे कोई नॉनसेंस वाली बात समझ में आती नहीं है, मतलब ये मीनिंगफुल वाली बात है. ओके, नाउ वी विल सी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मीन्स व्हाट? नाउ वी विल सी. The person or things which is spoken about in a sentence is called the subject. Now the person or thing which is spoken about in a sentence means, for example, Ram is a good boy. In this what we are talking about? We are talking about Ram. So Ram is a subject. मतलब जो जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? सब्जेक्ट हो जाती है. The person or thing which is spoken about the sentence is called subject. Okay, understood? समझ में आया? Okay, the predicate is the part of the sentence that makes a statement about the subject. Now जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, राम इज अ गुड बॉय. राम हो गया सब्जेक्ट और गुड बॉय क्या हो गया? गुड बॉय ये क्या बता रहा है? गुड बॉय हमें राम के बारे में बता रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. तो गुड बॉय क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. सी फॉर एग्जाम्पल, अरुण इज गोइंग टू स्कूल. ये एक सेंटेंस हो गया, बट अरुण इज सब्जेक्ट बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन. अरुण क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये एक लड़के का, बॉय का नाम है. एंड व्हाट अरुण इज डूइंग?
Arun is going to the school. Okay, and going to the school, it is predicate. Understood the difference between subject and predicate? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का बीच का डिफरेंस समझ में आया? पर्सन का नाम होता है सब्जेक्ट और द सेंटेंस विच इज मेकिंग सेंस and related to the subject is known as predicate. Okay, now we will turn the page. Now we will see types of sentences. Okay, how many types of sentences are there? Okay, now first type we will see a declarative sentence. Okay, now what do you mean by डिक्लरेटिव सेंटेंस? डिक्लरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नाउ वी विल सी. अ डिक्लरेटिव सेंटेंस मेक अ स्टेटमेंट, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. नाउ इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी. डिक्लरेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट. एक सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है एंड विच एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. मतलब वो सेंटेंस जो फुल स्टॉप पे एंड होता है. For example, this is a house. Now it is a sentence, this is a house, and it is ending with a full stop. See here, this is a house and full stop is there, means it is a statement, means it is a full complete sentence. This is a house, okay, and full stop. So it is very simple to know that declarative sentence, which the sentence which is end by full stop and which is making a sense or statement, is known as declarative sentence. Now after declarative sentence we will see interrogative sentence. Now what do you mean by interrogative? Interrogative means asking a question. For example, police has taken Rohit for interrogation. Okay, so interrogation means to ask question related to any case or crime. ओके, समझ में आया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब? इंट्रोगेटिव मतलब किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, किसी क्राइम के बारे में क्वेश्चन करना. ओके, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन पूछना. जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं आप उधर कौन सा साइन डालोगे? क्वेश्चन मार्क का. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, इज दिस अ हाउस? क्या ये घर है? हो गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन. क्या ये घर है? ये घर है कि हॉस्पिटल है? ओके, लाइक दिस क्वेश्चन इज लाइक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एंड इट इज एंड विथ क्वेश्चन मार्क. एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एक्सप्रेस सरप्राइज, एंगर, वंडर, एक्सेट्रा. नाउ exclamation sentence means you are surprised. If someone has kept surprise for you, for example, someone is giving surprise gift or someone is giving surprise chocolate to you, so you get wow. So this wow is known as exclamation. Okay, and it ends with an exclamation mark. And what is the exclamation mark? First straight line and full stop is known as exclamation mark. Now for example, what a lovely house. So it express your feelings, means after looking to the house what you are saying? What a lovely house, means you are expressing your feelings. So this is known as exclamation sentence. An imperative sentence. Now after exclamation we will see imperative sentence. Now an imperative sentence make a request or gives a command. नाउ इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि आप किसी को कमांड कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट आई एम नॉट हैविंग पेंसिल, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल. सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट. मतलब आपके पास पेंसिल नहीं है और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट. और पुट द टेबल हियर, इट इज़ अ कमांड दैट आई एम कमांडिंग यू पुट दैट टेबल here, and it ends with full stop. Okay my dear students, I hope you all have understood the lesson, and here we end our today's lesson. Okay Okay my dear students, here we have completed our today's lesson.
I hope you all have understood the lesson. And what we have learned in this lesson? We have learned that how many types of sentences are there, vowels, consonants, what do you mean by subject, and what do you mean by predicate. Okay, if you have any problem related to the lesson, you can ask me. Now it's the time to take leave, so I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy. Be happy, don't trouble your parents, don't disturb your parents. I'll see you soon. Bye bye.